राइट, सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट एन एट्रीब्यूट डोमेन। राइट क्लिक द मोंटगोमरी जियोडाटाबेस एंड क्लिक प्रॉपर्टीज। हमारा फोल्डर आ गया, ये डाटाबेस आ गई हमारी। राइट क्लिक करेंगे, क्लिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, क्लिक द डोमेन्स टैब। डोमेन टैब ओपन हमारे पास। क्लिक द फर्स्ट एम्प्टी फील्ड अंडर डोमेन नेम एंड टाइप latitude diameter। latitude diameter, in the description field type valid diameters for water litters। In the main properties, click the drop down for the field type and click float। फ्लोट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास click the first empty field in the code column under coded values and type 13। In the first empty field in the code column under coded value, the description field beside it and type 13 for the code's description। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऐड द फॉलोइंग कोडेड वैल्यू टू द लिस्ट। टू 2.25
नेक्स्ट हम करेंगे 9। क्लिक ओके टू क्लोज द database properties। ओके पे क्लिक कर दी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रिएटिंग सब टाइप्स एंड एसोसिएटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज एंड डोमेन। डाटा सेट पर डबल क्लिक करके ओपन कर लें इसे। क्लिक द सब टाइप्स टैब। लेटर्स फीचर क्लास हम इसको ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज, click the subtype field and type code। Click the description field next to subtype code 0 under subtype and type unknown for its description। अननोन करते हैं। एचएन कॉन्फिगर डिफॉल्ट वैल्यू इसको भी 0 असाइन कर देंगे। Select the domain drop-down list for the diameter field and click let diameter set is the default attribute domain for unknown subtypes। diameter ये diameter टैब आ गया। डोमेन click the material field and type D1 for the default value। D1 add the following subtypes: 1 for hydrant laterals, hydrant, 2 fire laterals, third as service laterals। Set the default values and domain for depth and service lateral default subtypes set to service laterals। Click OK। सबटाइप्स हमारी क्रिएट हो रही हैं।